and under the Textiles Ministry, I have been engaging with the Honorable Chief Minister's office. Technical textiles have a huge scope in Goa, and I'm hopeful that we have an upcoming, the first ever international conference and exhibition hosted by India, where we are seeing participants from over 60 countries, and we can encourage those in the field of technical textiles, which is a sunrise sector, to come and invest in Goa. In fact, the curtain raise of the textile event featured Kunbi sarees in Delhi when that happened, and we found people outside Goa who are doing Kunbi sarees. I've just met the Art and Culture Minister, and I've appealed to him that if there are people who want to revive it in Goa or outside Goa, the Government of India is more than happy to extend that support, especially for revival of skills and crafts which you have as identified who are languishing. तुम्ही जर काढून पळयशात जाल्यार मोदीजीच्या अजेंडाचेर कोण आसतलो आसा जाल्यार ह्या भारत देशांतलो अत्यंत गरीब मनीस, गरिबांतलो गरीब मनीस हो मोदीजींच्या सरकाराच्या पयली लिस्टाचेर आसतलो. हांगा खंयच फटीपण जावची ना, हांगा खंयच करप्शन जावचें न्ही, आनी ह्या करप्शना लागून देश आमचो किळकिळीत गेलो. जेन्ना आमी माथ्यार उदक रोयता तेन्ना पांया कडेन येता, केंद्राक उदक आयकता कितलेच स्कॅन्डलां, म्हणजे कदाचित 15-20 म्हयनो जो ओपन आशिल्लो ताचो स्कॅन्डल जालो. हजारो कोटीची 1,86,000 कोटीचे 2G स्कॅन्डल म्हणजे येता, म्हणजे मोबायल जे वाटप वयर जाताले ते कोणे खाल्ले काँग्रेस गव्हर्नमेंटचे मंत्र्यांनी खाल्ले. जब हम बात करते हैं 3 साल के अपने सफर के बारे में, आंकड़े गिनवाते हैं, उन आंकड़ों में कितने जीवन पर प्रभाव पड़ता है वो शायद इस मंच से हम गिनवा ना पाए. एक तरफ वो राजनीति जो वोट लेने के बाद 5 साल आपको भूल जाती है, और दूसरी ये कार्यशैली जो कहती है कि वोट की प्राप्ति के बाद से ही हमारा काम शुरू होता है. और ये कार्यशैली का फर्क आज 3 साल बाद हमें इस प्रांगण में लेकर आया है. और एक ऐसा ही विस्तार गोवा की ही धरती पर हमने किया, जब गोवा की धरती पर इस बात का भारतीय जनता पार्टी ने उल्लेख किया कि भाजपा के 2014 के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी होंगे. कुछ अद्भुत है इस धरती में, जो आप सबके आशीर्वाद से हमें इतिहास बनाने का मौका मिला.